Bismillahirrahmanirrahim. I am Akhtar Ali from HSM Shining Academy Kora. Subject is physics, class 9th. So we discuss introduction to physics. So physics is the branch of science which observes the nature, represent it mathematically, and conclude with the experiments. Physics is the branch of natural science that study matters, its emotion, its a behavior through space, time, and related entities of the energy, force. Physics is one of the most fundamental scientific discipline, and its a main goal is to understand how universe behave. तो असां इन तरीक़े सां फिज़िक्स खे डिफाइन करे सघूं था त फिज़िक्स साइंस जी उहा ब्रांच आहे जेका मैटर जी स्टडी उनजी प्रॉपर्टीज़ खे ऐं एनर्जी ऐं उनजी प्रॉपर्टीज़ खे हाउ मैटर एनर्जी आर इंटरचेंज उन्हनि खे डिफाइन कंदी आहे तो असां डेली लाइफ में फिज़िक्स जा केतिरा ई बिहेवियर ऑब्ज़र्व कयूं था जीअं असांजो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट थियणु वेदर्स जो चेंज थियणु डे नाइट जो चेंज थियणु सिज गिरण जो थियणु मून इलिप्स जो थियणु सन इलिप्स जो थियणु ईअं ई केतिरा फेनिमिनास आहिनि जेकी असां विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स उन्हनि खे असां स्टडी करे सघिया आहियूं जीअं असांजो ग्रेविटी जो कॉन्सेप्ट आहे हाउ ऑल थिंग्स फॉल टुवर्ड अर्थ माना अर्थ जी ग्रेविटी जे करे सभु शयूं ज़मीन ॾांहुं किरनि थियूं त इहे सभु फेनिमिनास जेके आहिनि असां फिज़िक्स जी हेल्प सां असां स्टडी करे सघूं था सम्झी सघूं था सो फिज़िक्स साइंस जी उहा शाखा आहे जेका नेचुरल साइंस जी उहा शाखा आहे जेका मैटर खे डिफाइन करे थी उनजे मोशन खे उनजे बिहेवियर खे एनर्जी खे ऐं मैटर एनर्जी जे विच में तालुक खे डिफाइन करे थी ओके सो फिजिक्स के मेनली वाइट एंड ब्रांच में डिवाइड कयो वियो आहे सो द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर एज फॉलो पहिरीं आहे असांजी मैकेनिक्स मैकेनिक्स छा आहे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन वी आर थर्मोडायनामिक्स उहा ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप टू एनर्जी एंड वर्क electricity. Electricity is the branch of is the study of property of charges and rest and motion. Magnetism is the study of magnet properties of material, how electricity is formed, how generator operated, motor operated. Is all study in electrical and magnetism. Uh, Atomic physics, branch of physics which deal with the composition of structure and properties of matter. Optics, optics study property with the help of optical instruments, physical concepts of lights, and sound. Sound is the study of production, properties, and application of sound waves. Nuclear physics deal with the constitution, structure, behavior, and interaction of atomic nuclei. Particle physics study the elementary constitution of matter, radiation, and interaction between them. Astrophysics, a study of celestial objects with the help of laws of physics is known as astrophysics, means study of stars, their behaviors. Plasma physics, a study of ionized states of matter and its property is known as plasma physics. Geophysics, a study of internal structure of Earth is known as geophysics. So in physics, physical quantities. Physical quantities shine. Those quantities which can be measured by an appropriate units are called physical quantities. There are two types of physical quantities based on their units. माना units जे लिहाज़ सां असां physical quantities के ॿिनि types में divide कयो आहे. हिकिड़ा fundamental quantities आहिनि, ॿिया असांजूं derived quantities आहिनि. So fundamental quantities छा थींदियूं आहिनि? Those quantities which have their own unit for measurement are called fundamental quantities. फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज बि इन्हनि खे चवंदा आहियूं छो जो इन्हनि जा पंहिंजा यूनिट्स हूंदा आहिनि मेजरमेंट्स लाइ माना दे हैव देयर ओन यूनिट्स डिज़ाइन जीअं असांजो मास आहे ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 जेको आहे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आहिनि असांजूं जीअं मास आहे मास जो ओन यूनिट किलोग्राम आहे किलोग्राम इज़ यूज़ टू डिफाइन मास लेंथ आहे लेंथ जो बेसिक यूनिट मीटर आहे टाइम इट्स बेसिक यूनिट इज सेकेंड जीअं करंट आहे इन जो एम्पियर आहे टेम्परेचर आहे इन जो केल्विन आहे लाइट इंटेंसिटी आहे इन जो कैंडिला आहे एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आहे इन जो मोल आहे so these are the 7 basic quantities which have their own units for measurement basic units for measurements उन्हनि खे असां इन्हनि खे चवंदा आहियूं fundamental quantities उन खां पोइ असांजी हूंदियूं आहिनि derived quantities those quantities which do not have their own units for measurements are called derived quantities their units are derived from the
basic or fundamental quantities means their units उन्हनि जो unit असां fundamental units जे combination मां ठाहियूं त उन्हनि quantities खे असां derived quantities चवंदा आहियूं. For example velocity आहे त हिन जो असां unit ॾिसूं त its unit is meter per second means meter is unit of length and second is the unit of time. जीअं फोर्स आहे हिन जो यूनिट न्यूटन आहे त असांखे ख़बर आहे न्यूटन बराबरि थींदो आहे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे. वर्क आहे हिन जो यूनिट जोल आहे. लाइक वाइज़ असां जीअं अॻिते ॾिसूं त मोमेंटम आहे हिन जो यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड आहे. जीअं टॉर्क आहे न्यूटन इंटू मीटर आहे. एनर्जी हुनजो जोल आहे. त एतिरी केतिरी असांजी क्वांटिटीज़ आहिनि जंहिंजो असां ड्राइव क्वांटिटीज़ चवंदा आहियूं छो जो हुननि जो पंहिंजा यूनिट न हूंदा आहिनि. हुननि जा यूनिट्स असां कॉम्बिनेशन माना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जे कॉम्बिनेशन यूनिट जे कॉम्बिनेशन मां ठाहींदा आहियूं. तंहिं करे हिननि खे असां ड्राइव क्वांटिटीज़ चवंदा आहियूं. अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ॿिनि टाइप्स में डिवाइड कयो वेंदो आहे. बेस्ड ऑन यूनिट्स असां पढ़ी आयासीं फंडामेंटल ऐं ड्राइव्ड एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन इन्हनि खे हिकिड़ी स्केलर क्वांटिटीज़ हूंदा आहिनि ॿियो वेक्टर क्वांटिटीज़ हूंदियूं आहिनि. स्केलर क्वांटिटीज़ छा खे चवंदा आहियूं दोज़ क्वांटिटी विच डू नॉट नीड डायरेक्शन टू डिफाइन. दे आर डिफाइंड विथ मैग्नीट्यूड ओनली विथ प्रॉपर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल जीअं असांजो वर्क आहे एरिया आहे डिस्टेंस आहे वॉल्यूम आहे डेंसिटी आहे त इहे उहे क्वांटिटीज़ आहिनि जिन खे डिफाइन करण लाइ असां सिर्फ़ु उन्हनि जो मैग्नीट्यूड खपे. माना एरिया आहे त असां जीअं डिफाइन कयूं त हुनजो जेको मैग्नीट्यूड ॿुधाईंदासीं त दिस रूम हैज़ 12 स्क्वायर फीट या दिस रूम इज़ 80 स्क्वायर फीट. ओके so this is area. Okay. जो वॉल्यूम आहे त असां सपोज द वॉल्यूम ऑफ दिस टेबल इज़ 30 मीटर क्यूब. सो इन तरीक़े सां असां इन्हनि खे डायरेक्शन ॿुधाइण जी ज़रूरत न पवंदी. सो उहे क्वांटिटीज़ जंहिंजे डिफाइन करण लाइ असांखे डायरेक्शन जी ज़रूरत न पए सिर्फ़ु हुननि जो मैग्नीट्यूड ऐं हुननि जो यूनिट्स ॿुधायूं उन्हनि खे असां स्केलर क्वांटिटीज़ चवंदा आहियूं. हुन खां अलावा असांजी वेक्टर क्वांटिटीज़ आहिनि. Those quantities which are specified by proper magnitude, units and direction are called a vector quantities. जिन खे डिफाइन करण लाइ असांखे हुननि जो मैग्नीट्यूड ॿुधाइणो पए यूनिट्स बि ॿुधाइणो पए ऐं हुननि को डायरेक्शन बि ॿुधाइणो पए त उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं वेक्टर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल जीअं विलासिटी आहे त विलासिटी छा आहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ विलासिटी मीटर पर सेकेंड. पर वी नीड डायरेक्शन टू डिफाइन विलासिटी. इहो फोर्स आहे त फोर्स जो डायरेक्शन ॿुधाए पियो 12 Newton force in direction of east. Torque, it also need direction to define. Momentum, electric field intensity, field, यानी कि electric field line of force जेके हूंदा आहिनि. ठीक त हुननि जो असांखे डायरेक्शन्स डिफाइन करणा पवंदा आहिनि. त अहिड़ी क्वांटिटीज़ जिन खे असांखे डिफाइन करण लाइ मैग्नीट्यूड यूनिट्स ऐं डायरेक्शन जी नीड हुजे त उन्हनि खे असां वेक्टर क्वांटिटीज़ चवंदा आहियूं. ओके फर्दर असां जेको आहे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कंदासीं. ठीकु आहे थैंक यू.